Assalamu alaikum students. This is another topic of chapter 2 live and living thing. Topic is cells, tissue and organs. Page number 22. Cells divide and grow to make more cells like them. Underline this line. सेल डिवाइड करते हैं एंड ग्रो करते हैं और मोर सेल बनाते हैं उनकी तरह के सेम सेल्स. और सेल कैसे डिवाइड होंगे, ग्रोथ होगी उनकी व्हेन दे गेट अ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, दे ग्रो एंड दे divide into further cells. A group of similar cells doing the same job is called tissue. This line should be underlined. जो similar cell है वो same type of job perform करते हैं, that is called a tissue. उसको tissue कहते हैं. ठीक है, जो similar cell join करेंगे that makes a tissue. Muscle tissue is made from the cell whose job is to contract and cause movement. Underline this line. जो muscle tissues हैं, like this. Can you see the meat piece? Meat is mainly made up of the muscle tissue. ये contract भी करता है और relax भी. ठीक है, these are the tissues. ये different cell, जो different cell नहीं, सिमिलर सेल से मिलके जो बनते हैं उनको टिश्यूज़ कहते हैं. और मसल से टिश्यूज़ का फंक्शन है टू कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉज मूवमेंट देना. डिफरेंट टिश्यूज़ कंबाइन टू मेक एन ऑर्गन. अंडरलाइन दिस लाइन. डिफरेंट टिश्यूज़ जो होते हैं दैट मेक्स एन ऑर्गन, वह जब वो कंबाइन होते हैं तो वह एक एन ऑर्गन बनाते हैं. लाइक आपका स्टमक ऑर्गन है, किडनी ऑर्गन है, हार्ट ऑर्गन है. दीज ऑल आर द ऑर्गन्स एंड दीज आर मेड अप बाय द डिफरेंट टिश्यूज, राइट. द स्टमक इज एन ऑर्गन दैट डाइजेस्ट फूड. मसल टिश्यू, नर्व टिश्यू एंड ब्लड टिश्यूज आर जस्ट सम of the type of tissue that make up the stomach. Look at the picture. This is the stomach. It is made up by the three type of tissues. Nerve tissue, as I discussed before. Nerve tissue वो कौन से थे जो कैरी करते हैं मैसेज. ठीक है, कि जो भी मैसेज स्टमक ने दिया वो बॉडी को दे रहा है. फिर उसके बाद ब्रेन को देता है, देन टू द स्पेसिफिक पार्ट. देन ब्लड टिश्यू टेक ऑक्सीजन, प्रोवाइड द ऑक्सीजन टू द स्टमक. दिस इज द मसल टिश्यू दैट ब्रिंग्स दैट गिव्स अ कॉन्ट्रैक्शन एंड गिव्स अ मूवमेंट. ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और देन इसी वजह से फूड ब्रेक डाउन होता है एंड देन goes to the small intestine and large intestine. So this stomach is made up by the three different type of tissue. तो ये 3 different type एक organ बनाता है. Organ work together to form an organ system. जब organ work इकट्ठे करते हैं तो then they make एक organ system. Underline this line. Organs work together to form organ system. Organ system carry out much larger job than a single organ is able to do. जो organs है वो like अब digestive system एक पूरा organ system है. उसमें small intestine भी आते हैं, stomach भी आता है, esophagus भी आता है. ईसोफिगस कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, उसमें भी मसल सेल्स हैं. लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें भी मसल सेल्स हैं. ब्लड सेल्स हैं, ब्लड टिश्यूज़ हैं. सो दे मेक अ ऑर्गन सिस्टम. तो जब डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क करेंगे देन मेक्स अ
ऑर्गन सिस्टम, और वो ऑर्गन सिस्टम कैरीज आउट डिफरेंट फंक्शन. उन हर ऑर्गन के डिफरेंट फंक्शंस होंगे, डिफरेंट जॉब्स होंगी जो वो परफॉर्म करते हैं. The digestive system is made up of various organs such as the stomach, liver, and intestines. As I said, the digestive system is an organ system, is made up of various organs. So this is the organ system. और हर इसका organ जो है वो different function perform करता है, जो as I already discussed it. Other examples of organ system are the circulatory system. एक और system है circulatory, जिसका काम है to send the nutrients and get rid of the waste from the blood, right? इसके main organs क्या हैं? Which carry blood around the body, and the nervous system which carries message from the one part of the body to the another. Nervous system is another system जिसमें different organs हैं, जिसका काम है to send them, carries the messages from one part of the body to the other through their nerve cells. And इसका main function, इनके main parts कौन से हैं? Brain, nerve cells, right? These are different spinal cord. These are three main parts of the nervous system, right? Now move to the next line. Organs together make up an organism. Organisms. Underline this. जब organ मिलता है तो एक organism बनाता है. Obviously, we are organisms. We are organisms. Plant is an organism. Animal is an organism. वो different organ system से बना है. An organism is something that is able to survive its own. Underline this line. कि organism जो है वो खुद अपने own पे survive करता है. Okay, students, we will review the lesson with the help of this equation. Cell to tissue, different similar cell make different tissues. Different tissues make one organ, right? One organ, different organs make an organ system, and organ system to make an organisms like plant, animal, and we humans, right? So this is a review. This is a quick review of this topic कि सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से organ, then organ system, then organisms, right? Now we will move to the worksheet. This is the worksheet of page 22. Topic cell, tissue, and organs. I hope the image would be clear to you. First question is आपने question लिखना है. You will write the question. Fill in the empty section in the table. ये worksheet आपने copy पे करनी है. You will do this worksheet on the copy, right? Fill in the empty section in the table. Make a table, 4 column, name of the structure, description, example plant, example animal. ये सेल है, टिश्यू, ऑर्गन, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म. ये डिस्क्रिप्शन उनकी डेफिनेशन है. टिश्यू की डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल डूइंग द सेम जॉब. You can take this description from a book also if it is not clear. I hope it is clear to you now. You can see organ system,
organ system, organ work together in a group. Organism, it is something that is able to live on its own. फिर यहाँ एग्जाम्पल प्लांट है, ऑर्गेनिज्म उन्होंने पाम ट्री लिया है. ऑर्गन सिस्टम, एक ऑर्गन लिया है ब्रांच, ऑर्गन सिस्टम ब्रांच. देन ऑर्गन लिया है लीव, टिश्यू है वेस्कुलर टिश्यू जो लीव्स में होते हैं. एंड देन रूट सेल. ठीक है. देन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल, चिकन, ऑर्गेनिज्म चिकन लिया, ऑर्गन सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम उसका. देन ऑर्गन कौन सा है, स्टमक और लंग. स्टमक आएगा, डाइजेस्टिव का पार्ट स्टमक होता है. स्टमक में एलिमेंट्री कैनाल में, एज आई डिस्कस अर्लियर, एपिथेलियल टिश्यू होता है. एलिमेंट्री कैनाल जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है फ्रॉम द माउथ टू द एनस. एंड दिस इज़ द स्किन सेल, और ये स्किन सेल में पाए जाते हैं, इसका सेल्स हैं. ओके, दिस इज़ द डायग्राम. ये स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, एनिमल का. सेल टू टिश्यू, देन ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज टिश्यू? नेम 3 टाइप ऑफ टिश्यू. टिश्यू क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल डूइंग द सेम जॉब इज कॉल्ड टिश्यू. मसल टिश्यू, नर्व टिश्यू, ब्लड टिश्यू. व्हाट इज एन ऑर्गन? गिव एन एग्जांपल. ऑर्गन की क्या एग्जांपल? व्हाट इज एन ऑर्गन? जब डिफरेंट टिश्यू कंबाइन होते हैं तो टू मेक एन ऑर्गन. स्टमक इज एन ऑर्गन. डिफाइन ऑर्गेनिज्म. एन organism is something that is able to survive it on its own. So this is done. So this worksheet should be done on your copies with the page topic, right? Now move to the next topic, that is organ system, page number 23. Organ system, page number 23. Organ work together in groups called organ system. Underline this line. Organ work, जब different organ work करते हैं groups में, that is called organ system. Some of the main organ system of the human body are shown in the diagram below. There is shown a different organ systems: breathing system, digestive system, nervous system, excretory system, circulatory system, which is you have done in your previous classes. Breathing system, first system, this is the breathing system. Exchanges oxygen and carbon dioxide. ये exchange करता है oxygen and carbon dioxide. You inhale oxygen when you breathe in, and you exhale carbon dioxide when you breathe out. This is the system. This is the nose, this is the trachea, this is the bronchioles, and the end of the bronchiole there is a alveoli जिनसे oxygen to the capillaries, blood capillaries में चले जाता है, गैस चली जाती है, और from there it picks up carbon dioxide and back to that process again and goes out. और कौन सी गैस पिक करती है from the blood? Carbon dioxide. In this way exchange of gases will be occurred. Now move to the digestive system. It is also done in your previous class in detail. Digestive system break down food into small molecule and absorb them into the blood. This is the function of digestive system. This is the structure of digestive system. It is started from your mouth till anus. It's a alimentary canal, digestive tract, right? And there is a
esophagus, this is the liver, stomach, this is the small intestine जो अंदर है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं, और ये सराउंडिंग में लार्ज इंटेस्टाइन है. यहाँ से फूड एंटर हुआ, passes through pieces into small molecules. Food break down into small pieces and then swallow it, and then passes through the esophagus to stomach to further breakdown will be happen, then passes to the small intestine जो digestible part है, जो पेस्ट फॉर्म में है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, वहाँ फर्दर डाइजेस्ट होता है, ब्रेक डाउन होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स एंड एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम. और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो रेक्टम में, यहाँ रेक्टम में स्टोर हो जाता है, एंड जो वाटर और सॉल्ट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है लार्ज इंटेस्टाइन, एंड वो उस जो फेसेस होते हैं जो रेक्टम में स्टोर होते हैं उनको सॉफ्ट करके एनस के थ्रू एक्सपेल आउट कर देता है. देन गोज टू द नर्वस सिस्टम. इट कैरीज मैसेजेस अराउंड द बॉडी. मैसेज कैरी करता है, ठीक है. They have 3 parts: brain, spinal cord, nerves के through they receive the message from the different part of the body and to the brain, and from the brain to the body parts. This is the function of nervous system. Excretory system: get rid of poisonous substance from the blood and control the water level in the body. And this line should be underlined. ये किडनी, यूरिनरी सिस्टम, 2 किडनीज है, यहाँ पे ये यूरेटस है, यूरेटस ट्यूब है, और फिर यूरेथ्रा है और ब्लैडर है. किडनी से जो एक्स्ट्रा पॉइजन सब्सटेंस होता है जो वो कन्वर्ट इनटू द यूरिन एंड पासेस थ्रू these tubes and stored in the bladder and then removed from the urethra.